So, hello, everyone. I hope you're doing well, you're fit and fine. And before starting with this problem, I just want to share a quote. यार, like life में ना कभी भी हार मत मानना. The important thing is whenever you took a decision, right? Try to think before you took taking that decision कि यार मुझे ये करना है कि नहीं करना है. And once you decide that, always try to make it correct. Okay, I have taken that decision. I don't have any regrets. I need to make this decision better, and you will feel the wonders in life, right? You try to do that and you will achieve whatever you want in life, right? So with that quote, with that full energy and enthusiasm, let's get started with this problem. Amazing problem. It's not a hard problem. Always I suggested that my goal is to make every problem a hard problem to easy medium problem, and you can say it's a medium problem. It's not a medium also. It's actually an easy problem. It's a standard problem. It's a standard problem. We'll see the intuition. See, हर प्रॉब्लम को मैं नहीं बना पाता, like I'm not able to make every problem easy, but yes, some problems which I hit the intuition for you guys care how you can think about it. You can solve now as many as questions of these type. Okay, and these are very common type question. Okay, let's try to see. The question says that you're given an integer nums, and also एक और important मेरा चीज है कि जब भी कोई hard question है ना, डरो मत. 6 pointer है, you can solve it. 6 pointer you can solve it. 7 8 are slightly harder, but 6 you can solve it. Believe it or not, you can solve a six pointer. Okay, you are that much. You are my army, right? You watch my videos, you get the intuition. You can solve these questions. You want to maximize the alternating sums of nums, which is defined as the value obtained by adding the elements at even indices and subtracting the element at odd indices. Okay, तो some reordering something कुछ तो फील आ रहा है कि num 0 minus num 1 and कुछ कुछ तो दे रखा है. अपन को इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है क्या? अपन को इसको मैक्सिमाइज करना है. ओके, then we are given a 2D arrays where some operations are given. Swap pi is given for each pair pi qi. In swaps, you are allowed to swap the elements in indices pi and qi. These swaps can be made perform any number of times. Very important keyword. Any number of times. These keywords को आपको mark करना है कि अच्छा any number of times, okay? And return the maximum possible alternate sum. ठीक है? अपन को कुछ तो समझ में आता है कि यार अपने पास एक एरे, एक इनिशियल एरे, इनिशियल अल्टरनेटिंग सम होगा. ठीक है यार, एंड देन कुछ ऑपरेशन से अपन को उसको हेल्प से क्या अपन मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या? अगर इसको अपन देखें तो अपन इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर अभी देखें ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट? +1 -2 +3, तो अपना आंसर 2 आता, बट अपन इसको क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं? हाँ यार, एक्चुअली अपन 0 और 2 को स्वैप कर सकते हैं. इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं यार, तो 3 2 1 हो गया, राइट? और अपन क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को भी स्वैप कर सकते हैं, तो इन दोनों को भी स्वैप कर सकते हैं, तो 3 1 2 हो गया. एंड इफ यू ट्राई टू सी, 3 + 2 - 1 इज द आंसर, व्हिच इज 4, व्हिच इज ग्रेटर. सो यार ये लगेगा यार स्वैप्स, ओके, कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे, मैक्सिमम कैसे लेंगे? बट इसमें ना थोड़ी मजेदार चीज अपन देखते हैं. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुमको ये इंट्यूशन आया क्या कि यार अच्छा स्वैप तो कर रहे हैं अपन, अपन चाहते क्या है? अपन चाहते हैं कि इवन इंडेक्सेस पे बढ़िया एलिमेंट आए, मतलब मोर ग्रेटर एलिमेंट अकर्स. यही तो अपना गोल है. एलिमेंट अकर्स, हाँ, ये हमको समझ में आया सही हम कि हाँ यार इवन इंडेक्स पे बड़ा होना चाहिए, ऑड इंडेक्स पे छोटा से छोटा, और इवन इंडेक्स पे बड़े से बड़ा, क्योंकि ऑड पे माइनस हो रहे हैं, इवन पे प्लस हो रहे हैं. यार ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है. अब स्वैप्स वाली जो कहानी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. अब ऐसा नहीं है, तुमको ये भी समझ में आ रहा हो कि ये बाई डायरेक्शनल है स्वैप्स, कि तुम 0 से 2 भी स्वैप कर सकते हो, 2 से 0 भी स्वैप कर सकते हो. अच्छा यार, ये भी ठीक है. ये भी कुछ हिंट दे रहा है क्या? कुछ फील आया? अच्छा, 1 से 2 भी ये स्वैप कर सकते हैं अपन, तो मतलब क्या है, ये भी एक बाय डायरेक्टेड हो गई. इसका मतलब क्या है, मैं 0 से 1 भी स्वैप कर सकता हूँ. ये इम्प्लिसिटेड नहीं था, बट ये हो गया. ओह, दे आर कनेक्टेड. डिड यू गेट अ फील? डिड यू गेट अ फील? अरे, दिस इज अ ग्राफ क्वेश्चन. आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. कुछ कुछ याद आ रहा है कि हाँ यार, कुछ कुछ ऐसा किया था कि यार अपन कर क्या रहे हैं. Basically what we are doing is, oh, we are connecting some edges, and somehow there is a transitive relation between 0 and 1 also. Hmm, means that somehow connected. Okay, then we can swap. Then we can swap any two of them in a
connected component in a connected कंपोनेंट ये फील आई तुमको यार? हाँ यार, सही है। इट्स वेरी इंट्यूटिव यार कि हम ऐसा करते हैं यार। स्वाप से तो काफी सारे वो ऑपरेशन से तो इतना काम बनेगा नहीं। अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को ट्रांजिटिव रिलेशंस भी है तो ट्रांजिटिव बनाने जाओगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ कनेक्टेड से रिलेशन है। अगर वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो मैं एनी टू किसी को भी लेकर स्वैप कर सकता हूँ। तो सब करने से फायदा क्या है? मैं चाहता क्या हूँ स्वैप करने से? दैट्स अ न्यू क्वेश्चन यार। दिस इज अ ओल्ड आइडिया, दिस इज अ न्यू आइडिया, दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम चेंज। वही एक प्रॉब्लम क्या होता है, एक ओल्ड आइडिया में न्यू आइडिया को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट? इवन इंडेक्स पे मोर ग्रेटर एलिमेंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं बस समहाउ अब अपन इसको देख लेंगे कि कैसे मिलेगा अपन को, दैट्स अनदर क्वेश्चन, लेट्स कीप इट एज अ ब्लैक बॉक्स। अपन इसको ऐसा सोचते हैं कि हाउ, अगर ये मेरे को मिल गया, लेट से मुझे मिल गया किसी तरीके से, तो मैं क्या इसको ऐसा कैसा स्वैप करूँ कि जिससे मेरे को बेटर फायदा हो? ओके, लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अपन पॉजिटिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स की लिमिट है क्या? तो बोलते हैं यार यस यस देयर इज अ लिमिट, नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इससे ज्यादा तो तुम पॉजिटिव बना नहीं सकते, राइट? तो स्वैप भी कर लो चाहे, बट पॉजिटिव उस इंडेक्स पे होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है यार। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं विद इन अ कंपोनेंट की बात करूँ तो कुछ इवन इंडेक्स होंगे, कुछ ऑड इंडेक्स होंगे, मैं उनको स्वैप तो कर सकता हूँ, बट क्या मैं काउंट को इंक्रीज कर सकता हूँ? नहीं। इन इवन इंडेक्स जितने इवन इंडेक्स ही रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इन ईच कंपोनेंट, अपन ये इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं कि हाउ वी आर अराइविंग एट द सॉल्यूशन, कि यार अपन को क्या क्या चाहिए। दैट्स हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? ईच कंपोनेंट number of even indexes. Why? You can maintain a odd index also, that's fine. You can total minus करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल लेना बदलना कंपोनेंट इवन इंडेक्सेस, ये क्यों जरूरी है? ट्राई टू थिंक अबाउट दैट कि अगर अपन किसी तरीके से एक सेट में एक सेट में एक कंपोनेंट का कंपोनेंट का अपन सॉर्टेड ऑर्डर में कर ले, स्टोर कर ले, वी कैन सॉर्टेड ऑर्डर स्टोर, वी कैन डू दैट, वी कैन डू, then what is the advantage? Can you tell me? Try to think about it. Did you able to getting it what I'm trying to say? Yeah, you are going in the right direction. You will be like Sayam. Yes, yes. That means what you are saying is that the number of count we have, अपन क्या करेंगे? Top that elements will take that. Will take that elements, that whatever the number of even indexes are there, and I will just take the largest that elements and map it to the even indexes. Right. So let's say the count is x of even indexes. I will pick top x from the connected component, not indexes, obviously the values, एक connected component, and बाकी को हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, बाकी को रिमेनिंग रिमेनिंग इन कंपोनेंट उसको अपन नेगेटिव कर देंगे यार, बचे हुए ऑड इंडेक्सेस को नेगेटिव कर देंगे। यार मेक सेंस, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास क्या बचा? नाउ इट्स फील लाइक क्या द प्रॉब्लम इज परफेक्टली सॉल्व। Make components do this stuff that try to know how many even indexes are there within a component, do a plus on them, take the largest top x from them, minus remaining, and job done, take answer. But now the question lies is how do you make a component? Can you remember that? Now try to understand. Are there any edges? The swaps are nothing but the edges, right? And they are bidirected edges. So what you can do? You can do what? It's very simple. Yes, you're cut. You guessed it right. It is DSU. It is DSU. See, it is a prerequisite. If you don't know DSU, you cannot explain the entire intuition here. I will just give you a slight thought process that how I implement particularly DSU. DSU is nothing but disjoint set union. It's a very good way to just check the number of connected component. Best way you can do that. So always go and try to learn and can come back to this video. Okay. So DSU will use, how will use DSU? We'll make the connected components using the edges. I hope everybody knows that how we can use DSU to make count connected component, right? There's a union function. There is a find function for finding the parent, right? Union function and find function.
And what we do, we find the ultimate parent for super parent, you can say that, for every node. And we can group on the basis of that super component, right? And then what we will do, we will maintain now a map of int comma multiset, because the value could be repeated as well. Multiset of int mp. This is what this is. Int is key is super parent of a component, and these are the values. So now what we will do, it's a very simple here. We have all the values in a sorted order. Now what we want, we just want the count also. So what we again made another map from the super parent itself to a int, the number of even indexes. Number of even indexes. And job done. And job done. What we'll do, we'll pick top X from here. Can you do that? Yes, you can do that. You can pop it out, reverse order, and then just play with n, let's say x, top x elements, and then remaining make it negative, and that's all. Yeah. So what did you do? You make a DSU, you do the union, and how do you find the super parent? If that you just find the parent, right? And this that is the super parent of that particular node, right? And then you club them on the base of super parent, and then finally you just finally club the answer. So I hope you understood the entire intuition. Let me just quickly walk through the code, and it will be very super intuitive for you as well. So let me just quickly show you how I implement disjoint. It's the best way to implement. I think it's very quick. What are you gonna do? Implement pair. Implement. Say always implement by union by size. It's very easy. Rank makes subtle differences. Always try to make using union of by size. So I maintain pair, parent vector, and size vector. I just made a constructor. And if you don't know about constructors, check it out my OOP series as well. I explain everything in detail about these classes. Okay, then I just wrote size one. Everyone has initially size one, parent of himself. That if a parent is there, he parent of himself. Then we'll find this way. This is a find way of finding the parent. What will we do? If x equals to pair of x, that means he is the ultimate parent of his component. If it's not the case, we just do this optimization, right? If you remember 2 and 3, we do that. So we go up back, you go up. This is the super parent. This is the super parent. This 3 super parent is 1. So it is happening like this. We're changing the edges. 1, 2, 3, right? So this is happening like that. The parent of 2 also is 1 and 3 is also 1. This is how it's almost constant. Ackermann constant, you remember 4 alpha. And this is the union operation. We just find the parent of A, find the parent of B. If the parents comes out to be same, that means they are in the same component. And if a size difference is there, means there is some subtle differences. We generally connect the smaller to the larger, right? So if the size of pair A is smaller, we just increase the size of pair B, and the pair B becomes the ultimate parent of pair A also, right? We did and elsewise otherwise. The main thing comes here. What we did do, we did that very simple, connecting the edges. Very important. They are bidirected edges. If they are they're directed edges, we cannot apply DSU. Why? Because DSU always work in bidirected edges. Important note that. Okay. Then what we do, this we maintain that set, right, for the maximum the elements, right, for a parent, super parent, and all the values of nums of I in that particular component. So what we did, and also we did that, and then also why we maintain multi-set, because it could be duplicate as well. And for indexes, even indexes, we maintain the count. Okay, these are fine. We important that this gives us the super parent I index. We did that. Now we maintain MP, we maintain count. Now it's very simple. What we did, we just want to find the top whatever count of that element, right? So this is the number of even indexes. नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस ये अपन को मिल गया यार, राइट? नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस मिल गए यहाँ से, एंड देन व्हाट वी डिड दैट उसको खाली कर देते हैं। जो स्टैक जो अपना सेट है उसको खाली कर देते हैं जब तक साइज बड़ा है। बट जब तक एन पॉजिटिव है, मतलब अपने पास इवन इंडेक्स बचे हैं, इवन इंडेक्सेस को लार्जर वैल्यू पे मैप करना है, राइट? तो वो अपना सबसे पहले अल्टीमेट गोल है। सबसे पहले अपन ने चेक किया कि इफ एन इज पॉजिटिव, मैप मेक इट पॉजिटिव, erase from the set is very important. This important condition you cannot do directly. ये लोगों का error आ सकता है. People will comment, oh, your solution is wrong. Hey, try to understand also these basics. If you do this directly, do let me know. You know the difference between this and this. Do you know the difference? There is a difference, subtle difference. What is the difference? Tell me. If you do this, it will remove all the occurrences of this element. R dot become last element, the largest element. But if you do this, only one occurrence will be removed. One occurrence will be removed.
remove. That's also a very important thing. So while implementing it, take care of these things, right? And then if n becomes equals to zero, less equals to zero, what we did, we just minus it because these are odd indexes remaining. And then we finally do the same thing. You can do now begin also, or begin also, does not matter. It's your choice. And this you return the answer. So it's a beautiful question, simple question, not very difficult. Understanding of the idea of DSU helps, and how you implement it quickly. I just coded very quickly. Why? Because it's simple. It's not very complicated. If I practice good enough by writing the DSU class, and that's the intuition. That only change was the even component part, even indexes part, maximum thing. That was the change part. This remains same. This was the. So I hope you like the video. And if you like the video, make sure you to the subscribe the channel and like the video. And yeah, stay tuned for the further updates. And also check out my OOP series. The link is in the description.